Welcome all in economics class. We have read about the price elasticity of supply, the percentage change method. We have seen that the concept of price elasticity of supply is similar to the concept of price elasticity of demand. But there is a difference that price elasticity of supply always have positive sign, which shows the direct relation between price and quantity supplied. We all know when price and quantity supplied directly related होते हैं. When price increases, quantity supplied also increases. When price decreases, quantity supplied also decreases. Here in this module, we are going to study about some specific situations of degree of elasticity of supply. First situation is when elasticity of supply is equals to 1. Elasticity of supply will equals to 1. It means it is called unitary elastic. When our supply curve, we can express it by plotting a supply curve also. When our supply curve starts from origin, this is our supply curve. This is our x-axis, y-axis, and here we are showing quantity supplied and on y-axis we are showing price. तो यहाँ पर हम देखते हैं our supply curve starts from the origin. When our supply curve starts from the origin and straight line supply curve is here, then we say elasticity of supply is equals to 1. It shows that यहाँ पर ये मैटर नहीं रखता है कि which angle this supply curve is making. Only we want to show here that elasticity of supply is equals to 1 when percentage change in, it happens when percentage change in price is equals to percentage change in quantity supplied. जितना प्राइस में चेंज आया है वह इनिशियली प्राइस वाज P, now it become P1. Quantity supplied initially was Q, now it become Q1 as increasing price is there. So here we can see this difference is equal, means percentage change in price is equals to percentage change in quantity supplied. Then we say that elasticity of supply is equals to 1. प्राइस में जितना चेंज आ रहा है उतना ही परसेंट चेंज क्वांटिटी सप्लाइड में भी आ रहा है. सेकेंड सिचुएशन इज द when elasticity of supply is greater than 1. It shows highly elastic. जब हम greater than 1 की बात कर रहे हैं, it means we are showing here highly elastic. हाईली इलास्टिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ग्रेटर देन 1 वैल्यू है इसकी. तो इट मीन्स व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ आवर सप्लाई कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम द y एक्सिस एंड आवर सप्लाई कर्व इज अ फ्लैटर कर्व. जब इस तरह का कर्व हमारे पास में आता है, दिस इज अ फ्लैटर कर्व एंड वी कैन शो हेयर दैट percentage change in price. Initial price was OP and quantity is Q. When there is change in price become P1, we can see quantity also increases and it become OQ1. But change in percentage of price is less than change in quantity. Percentage change, I can write down here. When elasticity of supply is greater than 1, it means highly elastic curve we got, and we got a curve like this, start from the y-axis, and this curve shows that percentage change in price is less than
percentage change in quantity supplied. You can see in this that change in price is less than change in quantity supplied. तो जब इस तरह की कंडीशन होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है, देन वी से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1. प्राइस में थोड़ा सा चेंज आया है लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज़्यादा चेंज आया है. नाउ थर्ड सिचुएशन व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1 मीन्स लेस इलास्टिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. Less elastic है, it means when we plot a graph, then our supply curve starts from somewhere from x-axis. x-axis से हमारा supply curve start होता है and this curve is steeper है ये curve. हमारा जब when elasticity of supply is greater than 1 तो हमने देखा था कि सप्लाई कर्व हमारा फ्लैटर था, लेकिन यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 है तो हमें कर्व किस तरह का मिलेगा? इट इज अ स्टीपर कर्व. एंड व्हाट इट shows that when price increases, quantity supplied also increases, but change in price is more than change in quantity. Percentage change in price is more than percentage change in quantity supplied. Means price में ज़्यादा change आ रहा है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ी है कंपेयर टू द क्वांटिटी सप्लाइड. प्रोड्यूसर इतनी क्वांटिटी को सप्लाई नहीं कर पा रहा है जितनी परसेंटेज में प्राइस इंक्रीज हुई है. जब इस तरह की सिचुएशन होती है देन वी कॉल द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस इलास्टिक फॉर दिस प्रोडक्ट. फोर्थ सिचुएशन, these are the 3 specific situations we have seen. Some extreme situations are also there. Extreme situation we can call them. In that first is the when elasticity of supply is equals to 0. जब ये हमारी फोर्थ सिचुएशन है, elasticity of supply is equals to 0. When it happens, it shows that when we plot a graph, we will get a curve, elasticity of supply curve, SS curve, parallel to y-axis, and it shows that price may be changed. Price पहले P थी, now it may be P1 और it may be P2. कितनी भी हो जाए प्राइस में चेंज आना, it doesn't matter for the producer. He will supply the fixed quantity and that is OQ. There is no change come in the quantity supplied whether the price changes to P1 or P2. प्राइस P1 हो जाए, P2 हो जाए, इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, बट क्वांटिटी सप्लाइड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, देन दिस सिचुएशन इज अ सिचुएशन व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 0. बिल्कुल इलास्टिसिटी नहीं है यहाँ पर, प्राइस का चेंज होने का कोई इफेक्ट हमें क्वांटिटी सप्लाइड पर नहीं दिखाई दे रहा है. क्वांटिटी सप्लाइड फिक्स्ड है, इतनी ही क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी चाहे प्राइस इंक्रीज हो जाए चाहे डिक्रीज हो जाए. एंड द लास्ट सिचुएशन that is also an extreme case. Fifth situation, when elasticity of supply is equals to infinite. When this kind of situation is there, we say we are plotting a supply curve here. We get a supply curve. कब होता है? इनफाइनाइट है यहाँ पर, इनफाइनाइट सप्लाई हो रही है एट अ गिवन प्राइस P.
given price P per, producer is ready to sell infinite quantity. It may be Q, Q1, Q2, कितनी भी क्वांटिटी सेल करने को प्रोड्यूसर रेडी है एट अ गिवन प्राइस. एंड इफ देयर विल बी एनी स्लाइटली चेंज इन द प्राइस, प्राइस थोड़ी सी भी कम हो जाती है, स्लाइटली डिक्रीज इन द प्राइस, then producer will supply zero quantity. This kind of situation is called when elasticity of supply is equals to infinite. So these are the some specific situations, or we can say the shape of supply curves.